For a normal person, how do you define financial planning? How they can do financial planning as student in Canada? Put Okay. some light on that. So yeah, my course was all about like these things, how to plan your finances. For a student, as you're asking, I would say पहले अपना एक छोटा सा फंड बना लो फॉर इमरजेंसीज, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स आज है, शायद कल ना भी हो. ठीक है, तो आई वुड से कैलकुलेट योर 3 to 4 months ऑफ एक्सपेंसेस एंड मेक दैट फंड, लीव इट सेपरेटली कि ठीक है अगर कल को जॉब चली गई टू सर्वाइव आई यूज दीज 3 or 4 months एक्सपेंसेस टू लिव. सो फॉर अ स्टूडेंट आई वुड से जस्ट बिकॉज योर इनकम एंड एक्सपेंस का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं होता, बिकॉज यूर लिविंग रेंट इज सो हाई इन टोरंटो राइट नाउ प्लस योर एक्सपेंसेस. तो फर्स्ट गोल शुड बी टू मेक दैट फंड कि अगर जॉब चली भी जाए सो यू आर गुड विद दैट बैकिंग कि मैं 3 महीने जी लूंगा. एंड फिर देखा नई जॉब मिल जाएगी यार, तो 4 से 5 महीने का पहले इमरजेंसी हाँ फंड लो. 3-4 months. या आई मीन अगर आपका मंथली खर्चा $1,000 है तो पहले $4,000 कहीं रख लो साइड में कि अच्छा अगर जॉब चली गई, बिकॉज पार्ट टाइम जॉब कैसे सीजनल होती है. अगर आज डिमांड है तो लोग हैं, अगर कल को सीजन डाउन गया there is nobody shopping in January and February, they will lay off people, right? उस time you need those money to survive. Okay. What other tips are there? How they can do financial planning? पूरी financial planning कैसे कर सकते हैं वो अपने? वही पहले गोल्स, मतलब गाड़ी होती है लोग या सबसे I think first let's go step by step. First thing is I think emergency fund. That is Yeah. most important, right? What comes the second? सेकेंड इज आई वुड से बहुत को गोल होता है कि हमें फीस निकालनी है खुद से, दे वांट गेट देयर फीस आउट, राइट? सो उसके लिए भी एक यू वांट पुट अ फंड लाइक और लाइक अ सेविंग्स अकाउंट सेपरेटली टू पुट दैट मनी. तो देखो यार कि अभी अगर तुम्हें $10,000 चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो यू हैव टू पुट सम मनी एवरी सिंगल मंथ इन दैट फंड टू गेट दैट कॉर्पस इन द एंड ऑफ 2 years, right? And usually students don't use these accounts called TFSA. उसके अंदर you can put your after tax dollars and save some money which is not taxable and you withdraw, and it's the growth is not taxable. तो उसके अंदर you can park mutual funds, cash, GICs. So just because you don't have enough money to play with, I would say so mutual funds and all, say you can shy away because right now your importance is a fixed amount, right? So GICs you can put, or like a systematic GIC where you put $50 of every paycheck that goes in the TFSA account and it's growing tax free. But yeah, with the student, like it is not much money to play around, right? तो उसमें ये है कि first objective is to have a fund of emergency and then have second year's fees. और एक और जो GIC है, that's your, I would say it's your like a startup seed funding for you in Canada. उसको जितना संभाल कर रखो उतना better है. I know it's tempting to see that $10,000 in your account and start spending it. iPhone available बहुत आसानी से होता है, MacBook आ जाता है. But that 10,000 is like your entire capital which you're gonna pre-seed. Yeah, it's actually that's a pre-seed round. Yeah, that's a pre-seed round. उसको बस रखो, उसको hamper तभी touch करो when you are like when you are dying in emergency. मैंने अपना जैसे आज तक टच नहीं किया, वैसे क्या वैसे पड़ा है. आया जॉब शुरू हुई धीरे धीरे तो जो खर्चा हो उसे मैनेज कर लिया. कि GIC तो उसको ऐसे ही रखना है बिकॉज यू नेवर नो, यूर इन अ फॉरेन लैंड, कल को कुछ हो जाए, पैसा चाहिए इमीडिएटली. इंडिया से पैसा आ जाता है, आई नो इट टेक्स 1 night or 2 nights, but having that fund with you is like a big sigh of relief. What else advice would go about finances to a student? Okay, so I would say buying a car. First was okay, first emergency fund. Yeah, I would say second goes to your GIC, right? No, second goes to your fees. How to collect your fees. Other ways, GIC can be one way of them. Yeah. Right. Third is saving your GIC that is already there. What next? Debts. बहुत कम. Debts is very easy, very tempting. Getting a, when you plan like this way, okay, I'm gonna buy an iPhone. It's gonna be $60 a month for next 12 months, or 24 months. So it's gonna be my new iPhone. But imagine like, that's your one commitment, and it becomes a habit. Then 60 is for your phone. 50 more for your plan, that's $100 right there. And then you would see that okay, abhi phone aa gaya, what's next? Because if you would not take that phone, probably you won't even feel of taking a car because you're not got comfortable with the debt, right? Once you get comfortable with having a debt, then you take more debt. So abhi ek debt se phone le liya, and what's next? Car.